हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस एंजल्स। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं आप वो ज़रूर देखिएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब तक हम लोगों ने जो केसेस हाईलाइट किए उनमें हमने ये बताया कि किस तरह से कंपनी के सेल्स एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ सेल्स गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिस सेल कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को मिस सेल कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें हम लोग ये दिखा रहे हैं कि नॉट ओनली द सेल्स टीम बट ऑल्सो द ग्रीवेंस मैनेजमेंट टीम of a particular company ICICI Prudential and the senior management किस तरह से ग्राहकों को रिटर्न कंफर्मेशन देने के बाद में अपने वर्ड्स से बिल्कुल मुकर जा रहे हैं और क्लाइंट्स के लगातार फॉलो अप करने के बावजूद उनको सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्लाइंट को एक एक्स अमाउंट रिफंड करने का प्रॉमिस किया गया था, 19 लाख समथिंग का अमाउंट रिफंड करने का प्रॉमिस दिया गया है रिटर्न में, और एक्चुअल जो रिफंड दिया गया वो 15 लाख का रिफंड दिया गया, रिफंड ऑफ प्रीमियम किया गया केवल। और हम लोगों ने वीडियो के दौरान दिखाया है जो ईमेल कन्वर्सेशन हुआ है क्लाइंट के बीच में और कंपनी के बीच में। तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी ने रिटर्न कमिटमेंट देने के बाद में बिल्कुल अपने वर्ड से मुकर गई है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के एंड में ज़रूर आप देखिएगा क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल है उसका रिकॉर्डिंग के कुछ अंश हम लोगों ने अपलोड किए हैं। जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो 24 जुलाई 2020 को हुआ है। करीब 1 घंटे 19 मिनट का कॉन्फ्रेंस कॉल है। कंप्लीट कॉन्फ्रेंस कॉल की रिकॉर्डिंग भी मैं लिंक में शेयर करूंगा, बट मैंने कुछ हाइलाइट्स शेयर किए हैं। और ये हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कॉल है ये हो रहा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के जो ग्रीवेंस रिड्रेसल टीम के ऑफिसर हैं मिस्टर सागर जाधव, मिस मिलन पांचाल, इसके अलावा नितिन जाधव करके एक ऑफिसर हैं इनके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही, शायद मुंबई या सांगली एरिया के होंगे। उसके बाद में देर आर एम्प्लॉयज़ नेम्ड एज केदार जाधव प्रोबेबली। उसके बाद में एक ऑफिसर है मिथुन करके, एक ऑफिसर है फिरोज़ करके। ये लोग सब जने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं। 24 जुलाई 2020 का कॉन्फ्रेंस कॉल है एंड इट इज़ रिलेटेड टू केसेस जो हम लोगों ने हाईलाइट किए थे उस टाइम पे सांगली एरिया के, नेमली सचिन खिलाड़ी, तुकाराम खिलाड़ी, दिलीप खिलाड़ी का वीडियो है। आप लोग देखिएगा ये वीडियो। विजया खांडेलकर जी का, एकनाथ पडलकर जी का वीडियो है, शोभा ताई का वीडियो है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सांगली एरिया के कई केसेस हम लोगों ने हाईलाइट किए थे और हम लोगों ने वो केसेस एस्केलेट किए थे टू द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड टू द चेयरमैन ऑफ आईआरडीए। तो वो वीडियोस अपलोड होने के बाद में जो भी कुछ हुआ कंपनी में, जो भी कुछ हो रहा था, वो एक फीलर आपको ज़रूर मिलेगा कि कंपनी कितना प्रेशर में थी। सो ये कॉन्फ्रेंस कॉल इस बात का भी प्रूफ है कि जब मैंने काम शुरू किया था 2012 में इंश्योरेंस एंजल्स का, जब हम लोगों ने फर्म लॉन्च किया था तो मुझसे कई लोगों ने कहा था कि अकेले आदमी के काम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये कॉन्फ्रेंस कॉल एक प्रूफ है कि अकेले आदमी के काम से फ़र्क पड़ता है। अगर अच्छी नीयत ईमानदारी से काम किया जाए तो फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। बुरे लोगों को डरना पड़ता है और ये डर ज़रूरी है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के कि इन ट्राइंग टू फेल मी, प्लीज़ डू नॉट फेल योर सेल्फ। अपने मॉरल्स, अपने प्रिंसिपल्स को संभाल के रखिए। ये कंपनी में आप आज हैं, आपके ऊपर कोई एक्स बॉस हैं, लेट अस से संदीप बख्शी आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल टीम की वीपी हैं, कोई अश्विनी बोंडाले, तो उनको खुश करने के चक्कर में वो आज आपके बॉस हैं, कल शायद ना हो, कल आप किसी और कंपनी में होंगे, परसों शायद किसी और कंपनी में होंगे, शायद उसके बाद में इस फील्ड में नहीं हो, कहीं और फील्ड में हो। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर वैल्यूज़। अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज़ को बचा के रखिए बिकॉज दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट टू यू। And in trying to fail me, do not fail yourself. You have already failed your company, you have already failed yourself, your principles. प्लीज़ अब उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। ये जॉब तो आएगा, जॉब तो जाएगा, दैट्स ओके। अपने प्रिंसिपल संभाल के रखिए। थैंक यू। प्लीज़ डू वॉच द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑडियंस, और वीडियो पूरा देखिएगा। हाय सर। Hello, Nitin sir. So, audience, we have a policy holder of ICICI Prudential with us today, and he want to share the pain that he has undergone having interacted and having transacted with ICICI Prudential. So, sir has requested not to disclose his identity. So, we will be not saying his name, neither the first name nor the last name, and we will not be disclosing his credentials. Personal credentials would be masked during the video.
we would be sharing some of the emails also, which he has marked and which on which the company had replied. But in those emails also, we will make sure that his personal details are masked. And during the recording of the video, during the uploading of the video, his face would also be masked. Is that okay, sir? Yes, thanks. Yeah. So, sir, please tell me like how it all started and what has happened. We are not asking your profile. If you can share a brief about a general profile of yours, it would be great for the audience. A general Okay. profile. Okay. So see, I work in IT. Okay. And what happened? I had an account, or I still have a salary account. Okay. Saving salary account with ICICI Bank. So as you know that we get everyone gets a salary, constant salary. So normally, ICICI Bank representative, they come to us as an investment plan and so many different things. So what happened in July 2017? ICICI Bank representative came to me. Okay, she said that there is a very good investment plan for me. I said, fine, that anyways, my money is anyways lying in the saving account. I'm not doing anything. So let's see her. So she came. So she given this particular ULIP policy, okay, whatever this ICICI Prudential. That time, how it was sold or missold to me was she mentioned that, okay, this is an investment plan. And as a bonus, you will also get a life insurance. Okay. Okay. And as usual, some pages, some you will get 15% return, 20% return, etc. etc. I said, fine. Anyways, this is like why this anyways lying in the saving account. So Let us move there is ahead. no harm. But what happened is that after few months of putting this money, of course, first premium which I've paid in July 2017, I realized, of course I searched, because as IT person we are always curious, right, to know. So I searched, okay, I gone to the document and I also searched. Then I understood this is actually insurance policy. So after they deduct all this, whatever their fees Charges. and other things, whatever left they invest. So of course, but that time I decided that okay, let's continue, because that time she told that representative that you have to pay till 5 years premium. And in policy page number 3, there is a clause 6 that also says that you have to pay this 5 years premium. I said, fine, no issues. Let me pay 5 years premium now, because what to do now? Let it be So that you, amount, whatever. so I saw you paid for 5 years, and in October 2021 you raised a query. So your policy Yes. was getting matured in July 2022. This is what I have seen. Okay. Hmm. In October 2021, you raised a query. Uh, Hmm. Audience, the query was very simple. Let me, I'm not sharing that mail. What I'll do is whatever mails have been exchanged, I will upload the PDF copy of those emails with his personal identity masked in the description of the video. Or probably with the video, we will upload the this thing emails also. So on 17th October, he clearly marked, आपने बोला उनको, आपने उनसे पूछा कि 5 साल मैंने पे कर दिया है, can I stop the paying premiums now, and what would I gain or lose? This was a general query that you asked. Am I right? Yes, correct. And Because ICICI Prudential, there is a robotic now. They have put robotic like call center. Like they do not give like specific policy number. Even if you put, they say that you have to drop a mail to them. Yes. So you dropped an email with a specific query. Ki what would be your, can you stop the paying premiums now? You have paid 5 years premium. When can you cancel the policy? And it was a general query that you raised. Okay. And all So, premiums were in time. That is also one yes, more thing. I perfectly never, okay. nothing is lapsed Agreed, anywhere. agreed, agreed. So, what was the reply and how did the reply, when did the reply came? A meaningful reply? Yeah. So 17th October, I raised the query. So there was nothing, no meaningful reply, just like auto reply that we will send you, we will reply you, but so date. So on 18th October, 24th October, 2nd November, 3rd November, 8th November, because I kept on asking them. Also, I used to keep on, raising in level 1, level 2 type their side. But But all these actual were meaning, but all these were auto replies. auto. There was no meaningful as such. So When was the actual what? first meaningful reply? Yeah. So the first meaningful reply, as you can see, came. Yeah. So it came on if you see the email, just let me open the email so that yeah. So first meaningful reply came on 12th of November.
Yes, Okay. I have seen that. And Yes. yes, and in that they only mention that first thing, I never asked them that I want to close the policy. I said, if I close the policy, how much I get? Yes. But their reply is also like auto type reply, where they say that please send us a cancel check. Hmm. No amount mentioned, nothing mentioned. They are not at all replied to my query, what I'm asking. Yes. They have just clearly mentioned, they have just mentioned, as a special case, we have accepted your request and shall process the refund of premium. Wherein you have never requested for refund of premium and you have never requested for cancellation of policy. You have just raised a simple query ki if you close the policy, what would you get? That was it. So, Exactly. but they came up that key as a special case, we are processing the refund of the premium paid by you. On Yes, that correct. email, you replied on 13th of November asking ki this is not what I was originally asking. Anyways, if I Hmm. opt for cancellation of the policy, I want to clearly know the amount which I will get as a refund. This you have clearly asked them on 13th of November. Okay. Yes, So on 22nd November, I can see there was a mail response. Can you share what yes. was the response on 22nd November? If you can please read out the response. Yes, yes. So 22nd of November, okay, they replied that see again, this is 3 lakhs per year. So total I paid 15 lakhs as a premium amount. Okay. So what they said that as a special case, we have accepted your request and shall process the refund of fund value paid by you, that is 19 lakh 38,163 rupees and 1 paise. Perfect, perfect. And then on this, this reply came to you on 22nd of November at 11:20:23 and you reply on Yes, this mail on 22nd November itself at 12:33:53. Okay. yes, And what was yes, your reply? If you can please read out the reply that you marked on yes. this mail. Yes. So I replied to them, please see attached cancel check. This is for the refund of 19 lakh 38,163 rupees and 1 paise. And I've mentioned my policy number. Perfect. So, audience, for your ease, I will just share these two emails. Let me see if I can share the screen. Hold on. So audience, this was the 17th October email. We will hide, of course, the personal details. On 17th October, he has only asked, at the time of mis-selling, I have been informed that after 5 years payment, I can stop paying. Can you throw light on this? What exactly it means and what am I going to gain or lose? I just keep paying premiums in order to ensure I don't lose capital in form of any penalty or charges. Now 5 years of my premium payment is completed. There is also called guaranteed minimum return. So he's asking some questions. He has never said ki I want to cancel the policy or no whatever. So on 17th October he raised a query. On this query, after several follow-ups, gets a 22nd November. first 12th November. meaningful reply on 12th of November. In that 12th of November mail, he gets a reply. We refer to your concern received by us on so and so date for so and so policy. As a special case, we have accepted your request and shall process the refund of premium paid by you. In this mail, they have mentioned that they will pay the refund of premium. And they have asked this policy holder to submit the cancel check and bank statement. Am I right, sir? Yes, right. On this 12th of November mail, the policyholder replies to the company on 13th November asking what will be the amount that I will get as a refund. He's clearly asking what will be the amount that I'll get as a refund. After this 13th November, sir, you received a call from some lady. Am I right? Yes, that's right. What was discussed in that call? Did they told you like what they are refunding and were you agreed to that refund? How much amount was Yes, refund was offered? yes, yes. So the lady mentioned that she like it will be like a 15 lakh, which is paid over the 5 years time. So I clearly said that see 15 lakh. What about the interest? That is called IRR in financial language, right? For Yes. every 5 years. Huh. So of course, means as you know, complete sequence. They never reply in time, right? They already frustrate the all policyholders. So I clearly ask her that 15 lakh is not something which I'm going to get. I will agree. No way. Of Either course. you give us the fund value which is more, okay, or else you tell me how much you will refund. For like 15 lakh, how I will agree. What about my interest and all these Of things? course. And So in this case, sir, if they were not, if you were not able to, if you were not agreed to the refund, you could have easily waited for the maturity period that is in July 2022. Only absolutely. 7-8 months were remaining, and you would have got the fund value any which ways.
because you have paid your all the premiums timely, and 5 years is the lock-in period. The lock-in period was getting over in July 2022, and you could have received the amount. So why would you agree for 15 Ideally, lakh yes. rupees? Nitin, ideally, yes. But see, the base itself is cheating here. You understand, right? Yes, yes. I When the policy selling itself is mis-sale, I do not believe whether they will refund or not. यहाँ पे base ही भाई wrong है उनका, base ही गलत, cheating है, fraud है. बिल्कुल So सही बात है. what is the guarantee that after 5 years they will refund me? They will do the हाँ, same thing. What did yes of course. So in again coming back to that call, so ये कॉल में आपने मना कर दिया कि मेरे को 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे आप कितना अमाउंट देंगे वो क्लियरली मेंशन करो. अभी इस कॉल के बाद में ऑडियंस सर के पास में एक मेल आता है 22 नवंबर को. आई एम शेयरिंग दैट मेल आल्सो विथ यू. लेट मी शेयर दैट मेल. दैट 22 नवंबर को दे हैव क्लियरली मेंशन्ड गुरप्रीत मारवाह करके कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफिसर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, एंड ही मार्क्स डियर पॉलिसी होल्डर, उनका नाम लिखा हुआ है, वी कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, वी रेफर टू योर कंसर्न रिसीव्ड बाय अस ऑन 13th of November, blah blah blah. We understand that you wish to discontinue and cancel your policy. As a special case, he clearly mentions, as a special case, we have accepted your request and shall process the refund of fund value. He is clearly mentioning fund value paid by you for rupees 19,38,163. He has mentioned this amount in words also. Okay, sir? And yes. On this very mail, after few minutes, you reply also, please see the attached cancel check. This is for refund, and you clearly mentioned this is for refund of rupees 19,38,163. Policy number so and so. So it clearly shows that the company agreed to pay 19,38,000 to you. And after that, sir, what happened? Now, after agreeing to pay 19,38,000, how much have they paid to you, sir? They have only paid me the premium amount, that is 15 lakhs. Okay. And obviously it was a shocker for me because how come they pay 15 lakhs? So I raised a level 3 grievance twice, okay, which I shared with you. So obviously both the times without giving any explanation, they only you can share that. That audience, let me share that email as well. Two replies are there. I will share the last reply that was marked on 28th of December. This reply has been sent to him by Aniket Nigudkar, who is again a complaint redressal officer, but this time he is from Service Recovery Desk. So Service Recovery Desk is a desk that is like directly associated with the CEO of the company. So he is clearly asking ki why have I received only this thing, 15 lakh rupees. What about the remaining 4,38,000? He has marked the mail. He clearly says when there was mutual agreement reached that ICICI Prudential will refund the fund value of policy, that is 19,38,000. Why I received a mail that you have initiated a payment of 15 lakhs? Who has decided on this? What about the shortfall of 4,38,000? So he's clearly asking his question, but he's getting a reply, a point blank reply. We refer to your email address to our grievance redressal officer pertaining to so and so policy. In response to the same, we understand that you are not satisfied with the refund received and wish to transfer full refund. Considering a special case, we have processed the refund amount of 15 lakh rupees. Again, they are saying कि हमने 15 लाख ही दिया है. वो पूछ रहे हैं कि मुझे 19 लाख क्यों नहीं मिला. जवाब आ रहा है हमने 15 लाख दे दिया है. फिनिश. अब इसके बाद में आपको कोई जवाब ही नहीं है. So this is like कि स्टोन वॉलिंग. These kind of replies we say, these are stone walling replies कि अपना सर दीवार से मार लो. आप जो पूछ रहे हो हम उसका जवाब देंगे ही नहीं. So this is something which is very wrong, unethical, which is completely immoral. आप लिख के दे रहे हो कस्टमर को 22 नवंबर को कि हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं रिफंड फॉर 19,38,000. देन द कंपनी is processing a refund of only 15 lakh rupees. When the customer is asking, he is getting a reply from service recovery unit that only 15 lakh rupees has been paid and this is what is payable. Nothing can be done. So this is something which is very pathetic, sir. So we will definitely highlight your case, sir, to the concerned authorities, to probably to the IRDA, chairman of IRDA, and to the officers of IRDA also. We will also try, if the policy has been sold through a bank, we will also try to keep the governor of RBI in loop. Let us see something. I'm sure something definitely good would turn out. But the problem is, after highlighting the case on platforms like Insurance Angels, the company might agree to refund,
बट व्हाट अबाउट द पीपल जिनके साथ पहले चीटिंग हो चुका है और वो हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इंश्योरेंस एंजल्स या कोई और प्लेटफॉर्म्स हो गए, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो अब तक चीटेड हैं, ऐसे आप जैसे सर कितने ही कस्टमर्स होंगे, हाउ मेनी पॉलिसी होल्डर्स वुड देयर वुड बी हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पॉलिसी holders who would have grievance but their grievances are not being addressed. This is the real issue which IRDA and which RBI and which government officers need to address. This is a serious concern. Am I right, sir? Sir, I will just add in this point. Almost, I will say more than 90% of people even do not know they are cheated at the first place. Yes. They just on hope they just keep on paying, okay. But actually, these fangs of this insurance company, especially ICICI Prudential, comes up when there is a point of refunds. Payment. Yes. Right. Yes. When they sell, it's a completely different picture. The department is different for pre-sale department, and this recovery and all this, give back department is different. So this is something. Forget about insurance. This is something. What you can say, this is complete open cheating. How such listed companies are doing their businesses? I was shocked to see. I was shocked to see your case, sir. This is a first of kind of your case, जैसे हमने देखा है कि like कंपनी लिख के देने के बाद में पलट गया है. This is something a kind of blatant blunder कि open blunder. Not blunder. This is, see, if it is a blunder, then they would have accepted at a level 3, right? Yes. If you are writing 19 lakh 38,000 whatever amount, on that I'm issuing the cancel check as acceptance, how you can revert back 15 lakh rupees? This is something which is like surprise. This can be said to be a kind of a policy कि हम लोग तो यही करेंगे, हम तो ऐसे ही behave करेंगे. Yes. Even if it's a mistake, okay, from whichever XYZ person, in level 3 level 2 can rectify, level 3 can rectify. So but they are not ready to rectify also. This is a shame. This is completely a shame. Rectify, they're not answering to the query. Means why this is thing, right? They are not ready. So either they are not accepting or denying. It's a in-between stand they are taking. Right? Stonewalling. This is clearly a stonewalling kind of a thing. Perfect, sir. We will definitely highlight your case, sir, and then I'm sure something good will turn up, sir. Thank you for highlighting your concern. Yes. I'm really thankful that you came forward and you decided to speak to our audience. Thank you, sir. मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि जो कोई भी अपने हैं स्टाफ, सीनियर मैनेजर है, एसएससी है, अगले कुछ दिनों के लिए आप है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं. मतलब ये काम है ना कि आपके फ्यूचर के लिए, अगर ये यहाँ पर ट्रबल बढ़ गया ना तो इन फ्यूचर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी. आपको बिजनेस करना वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा. क्योंकि लास्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है राजस्थान में, जब मैनेज करता था ना, ये इतने तुरंत फैलता है ना, इसका पब्लिसिटी इतना ज्यादा होता है कि वो डिफिकल्ट हो जाता है. फिर अगर एक दो कस्टमर को भी पैसा मिल गया उसके थ्रू तो माउथ पब्लिसिटी उसका चालू हो जाता है. जहाँ पर हमने सही बेचा है ना, वो वाले कस्टमर भी आ जाते हैं. तो अपने को जितने जल्दी से जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी ये इश्यू को क्लियर करना है. और स्पेशली अभी ये इश्यू जो है ना, वो एक विलेज के लिए है, एक करगनी विलेज के लिए है. हमें उस विलेज से बाहर नहीं लाने देना है इश्यू को. तो जितने भी कस्टमर इस विलेज के हैं, उनको आपको प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना है. उनको उनका कंप्लेन आने से पहले उधर पहुंचना है अपने को. आपको इसमें किसी भी हेल्प लगेगी, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो. पॉलिसी रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत दे दूंगा. और हमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सारे कस्टमर्स को निपटा देना है. कोई भी कंप्लेंट उसके थ्रू नहीं आनी चाहिए. बस अपना वही टारगेट है. आज भी हमारा अमित सर का, नितिन का मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमको यही डिसाइड हुआ कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर हम विलेज को क्लीन कर देंगे. कस्टमर रेडी नहीं होंगे. शुरुआत में कस्टमर रेडी नहीं होते, क्योंकि एक कस्टमर अगर 10 15 बार बैंक जा चुका है, सांगली ब्रांच जा चुका है, तो वो इजीली इतना अपने पास रिटर्न नहीं आएगा. ऐसे केसेस में अगर आपको चाहिए तो हम कस्टमर के अकाउंट में सेम डे क्रेडिट करा सकते हैं. अगर 1-2 कस्टमर्स को भरोसा आ जाएगा ना, तो वो अपने आप अपने को साथ देना चालू करेंगे. आपको ऐसे लग रहा है कि ये कस्टमर को अगर हम ट्रस्ट फिर से इसका गेन कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली मुझे बताओ, हम इमीडिएटली उस पर काम करेंगे. नितिन बोला था तुमने. अब मुझे है ना 2-3 चीजें चाहिए थी. एक तो इनको जहाँ पे वीडियो बनाया होगा
वहाँ पे इन लोगों को क्या पिच करना है, कैसे पिच करना है कस्टमर को, एनी टिप्स फ्रॉम योर साइड, एंड जहाँ पे वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे क्या पिच करना है। सागर, यू वांट टू गो और नहीं आप बता दो ना। वो पूछ रहा है कि जहाँ पर ऑलरेडी कंप्लेंट आई है ना, वो कस्टमर को क्या बताना है, जहाँ पे ना कंप्लेंट, सॉरी हाँ, लेकिन जहाँ पर भी कंप्लेंट आई है ना, उस कस्टमर को प्रॉमिस नहीं करना है कि हम आपका पैसा लौटा देंगे, तो उसकी ऑलरेडी कंप्लेंट आई है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम डिक्लाइन कर सकें। तो जहाँ पर भी कंप्लेंट आई है ना, उसके स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स कलेक्ट करो। जैसे अभी वो लेडी है विजया, उसको पूछो आपका बेटा क्या करता है, ठीक है, वो गोल्ड रिफाइनरी में काम करता है, तो कितना कमाता है, ठीक है, इतना कमाता है, उसके घर का सिचुएशन कैसे है, घर में टीवी, फ्रिज, फिर उसके घर पे कोई गाड़ी है बड़ी, तो ये सारी चीजों से उसका फाइनेंशियल स्टेटस अपने को पता चल जाएगा। तो ये सारा नोट डाउन करो। राजस्थान में एक टाइम में ऐसा हुआ था, टीम की रेगुलर बिजनेस बंद करके सारे सेल्स लोग ने सिर्फ सर्विस कैम्प किया था। 3 महिने बिझनेस नाही झाले ना राजस्थानमध्ये, उदयपूरमध्ये 3 महिने बिझनेस नव्हता केला। और वो लोग रोज उठ के सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कंटिन्यूसली कस्टमर विजिट पे गए थे। आप अमित गोयल को पूछोगे ना, अमित गोयल नोज इन एंड आउट, मतलब ही विल ऑब्वियसली टेल यू गाइस, वो बताएंगे कि किस ट्रॉमा से ये सब हुआ है, और ये अभी से नहीं, लास्ट 5-6 ईयर्स से चल रहा है। एक लक्षात घ्या चॅम्पियन्स, की आपल्याला हे होऊ दे ना 2-3 वर्ष वगैरे, असे एजंट जे पैशासाठी काही करू शकतात, तर आपल्याला थोडं शार्पली काम करून लगेच ते संपवायचे मॅटर तिथल्या तिथं, ठीक आहे ना, म्हणजे हा वाढून द्यायचा नाहीये, तर वाढलं तर आपल्याला काम देणं हेच करत बसावं दिवस असं, ठीक आहे, तर आपल्याला वाढून नाही द्यायचं, तिथे ते संपवायचे, तर त्या पद्धतीने वर्कआउट करूया आपण कसं करायचं। माझं तो सजेशन आहे, तुम्ही विनोदला पण इन्व्हॉल्व करा, उद्या पाहिजे तर विनोदला पण बोलवा, त्याच्या बॉसशी बोलायचं असेल तर अमित सरांना सांगा, ते आरएसशी बोलतील पण उद्या सुट्टी आहे, बँक बंद असणार, काही काळजी नाही, विनोदला बोलवा तुम्ही, विनोद मिथुन दोघांना बोलवा। क्लोज ग्रुप काम करना पड़ेगा नितिन, मतलब दिस सेट ऑफ पीपल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से बात करनी चाहिए या फिर इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आणि हे जर इश्यू व्यवस्थित, हाँ, ये अगर ठीक से हुआ तो लाइफ इजी आगे, अदरवाइज लाइफ इज गोइंग टू बी रियली बैड। आणि तुमचं सेल्स कंट्री हेड पर्सनली मॉनिटर करतायत, म्हणजे आज त्यांचा कॉन्कॉल झाला HR हेड बरोबर, म्हणजे विचार करा। मिस्टर पाल्टा, सुजीत, मिस्टर पाल्टा, जुड़ाजीत दास, कनन, दीपक किंगर, ये सारे लोग इस मैटर को पर्सनली रिव्यू कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन नितिन हैज बीन पुश्ड ऑन दिस। यू नो नितिन, अमित गोयल ने आपसे बात की है। राईट। हाँ, काय बोलले सर, नितिन 40 लाखाचा बिझनेस गेला, मला काही फरक पडत नाही, हे कंप्लेंट्स नको आहे। तो उस हिसाब से डाउट असेल तर विचारा। ओंकार इज फ्रॉम दैट ब्रांच, विनायक एंड केदार उनके लिए तो नया है ये सब। हाँ, बट विनायक एंड केदार, यू गाइज विल हैव टू बी ऑन वेरी मच रेड अलर्ट, बिकॉज अगर आप नियर बाई ब्रांचेस से हो, ऐसा नहीं है कि नितिन एक जगह अटैक करता है, वो करता है ना, वो टर्माइट की तरह है, वो पूरा खोखला कर देता है, तो उस हिसाब से तुमको भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अरे तो करवाओ ना भाई, सिचुएशन ऐसी है कि बैंक पूरे संडे को भी खुलेगी अगर सिचुएशन ऐसी आई तो, आपको पता नहीं है, मैं इसलिए हम कब से बोल रहे हैं कि सिचुएशन गंदी हुई ना तो बैंक रात को भी खुलेगी। अरे मी होळीच्या दिवशी राजस्थानमध्ये ब्रांच खोलली है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल हम बैंक खोलेंगे ना, तो सबको डाउट आ जाएगा ना, बैंक क्यों खोली है वगैरह। नहीं, दैट इज ओके, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक खोलने के लिए उनको अप्रोच लगेंगे ना सारे, तो उनको लेने पड़ेंगे अभी। तो वो आप अमित को बोलो। ठीक है,